इरविन टेक्सास। अभी मैं इरविन टेक्सास के अंदर हूँ। केंटकी वाला जो व्लॉग था वो बन नहीं पाया बिकॉज आई वॉज टू नर्वस आफ्टर कोविड। इट्स बिन वाइल। उसके 1-2 वीक के बाद वापस मैं टेक्सास के अंदर आया हूँ, तो आज मैं व्लॉग बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। द रीज़न आई वॉज टू नर्वस इज बिकॉज देर आर टू मैनी थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड बेसिकली उतना टाइम नहीं मिलता कुछ दूसरा सोचने में। Today I'm basically free and one of my Chinese friend he is coming to pick me up and we are going around in Texas. So क्या हुआ, कल हम लोग सुबह को बॉस्टन से निकले थे और आई थिंक 4.5 घंटे का फ्लाइट था टेक्सास के लिए, लेकिन समहाउ वेदर ख़राब होने की वजह से शिकागो से पूरा राउंड बाउंड होके आए तो 5.5 घंटा लगा। फाइनली 1 बजे हम लोग यहाँ पे पहुँच गए टेक्सास के अंदर। दैन हम होटल में आए, काम ख़त्म किया। मैं मेरा मैनेजर एक है उसको मिलने के लिए गया बिकॉज लास्ट आई थिंक 2019 में उसके साथ काम किया था। उसके बाद मैं उसके घर पे कभी नहीं गया था और वो बॉस्टन से मूव हो गए टेक्सास आ गया, तो मैं वहाँ पे गया था। आज नया दिन है, नाउ आई एम फ्री, सो माय चाइनीज फ्रेंड इज कमिंग टू पिक मी अप एंड वी आर गोइंग अराउंड इरविंग टेक्सास टू सी व्हाट्स न्यू एंड लाइक हाउस टेक्सास। सो फार आई एम लाइकिंग इट। एंड उसने भेजा ETA 9:20, अभी हुआ है 9:30, सो अभी आई थिंक 5-7 मिनट के अंदर आ जाए। My friend Josh Kim. Hey. My Chinese fellow. Hindi Chini bye bye. Bye bye means brother. Oh, nice. Korean though, but okay. Oh, Korean? Yeah. You are Korean? Okay, so my bad. He's Korean, not Chinese. अभी हम लोग ये स्टॉक यार्ड के जैसा कुछ है, यहाँ पे आए हुए हम लोग। यहाँ पे कैटल जो है बड़े सींग वाले, वो यहाँ पे उसका ऑक्शन होता है टेक्सास में, और जो काउ बॉयज है विद द हैट वो यहाँ पे आता है और बेचते हैं, लेते हैं, खरीदी वगैरह होता है। तो हम लोग ये देखने के लिए आया। आज बिल्कुल हम लोग टाइम पे आए। मैंने टेक्सास का जो प्योर काउ बॉय होता है उसको अभी मैंने देखा। आई थिंक मैं उसके साथ बात करने जा रहा हूँ अभी। Are you like a real cowboy? I consider myself a real cowboy. I've Really? rode my whole life and competed on horseback and do this here. That's good. Do you mind if I take you in my video? So he is real cowboy. Look at his guns and shoes, you know, like a different attire. I really like the hat. We'll do a gunfight show right here at 11:45. Nice. We'll fire them off. Nice gun show. It's a comedy show. We got a lot of kids here all the time, so we keep it funny. Okay. We'll put a smile on your face, I promise. Nice. I also like your mustache. Thank you. It was nice talking to you. Thank you. So ये स्टॉक यार्ड एरिया है, यहाँ पे बहुत ही फ्रेंडली लोग हैं। वो जो था वो अभी बता रहा था कि in 30 minutes they are having this like a gun show, Texas cowboy, where you walk, you know, and then turn and like a shoot, so something like that. But वो बोला कि ज़रूर आना यहाँ पे देखने के लिए and you will be really amazed. So हम लोग के पास टाइम नहीं है, देखेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो आएंगे। But it's really like, did you see the guns on his vest? It's really good. Welcome to Texas.
लाइव ऑक्शन प्लेस। यहाँ पे इसके अंदर जाने का परमिशन नहीं था, आई थिंक ये साल से ही खुला हुआ है। कहते हैं इसको लाइव स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे आप जो भी मतलब कैटल्स वगैरह है उसको सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो अगर आपको कोई अच्छा ब्रीड लगा तो। इट्स बेसिकली अ काउबॉय स्टेट। Josh, how was the day so far? That was pretty good. We got to see a lot of cowboy action, some historical stuff. You know, got to see some cattle. Yeah, big horn cattle. Yep. So yeah, आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। अभी हम लोग जा रहे हैं लंच के लिए। And I'm pure vegetarian, but he's not. So he is a good friend, and he found one good restaurant where we can eat vegetarian food. So we're gonna head there. अभी हम लोग जा रहे हैं, that's right, we are going for shooting range. ये जो मेरा friend है, he is crazy about guns. Again, he is from military family, so he has guns in his basically possession, 3-4 guns. So now हम लोग जा रहे हैं shooting range में और वहाँ पे हम लोग shooting practice करेंगे, and I will also gonna try some new things. ये गन जो है वो है AR-15. Josh, this is AR-15, right? AR-15. Yeah, AR-15. We're gonna try. Safety course. Yeah. And then remember all the safety. Dude, you have...
This is mine, the big rifle. This is हम लोगों ने अभी जस्ट शूटिंग करके आए. Josh, what do you think? How many rounds we did? So we probably did a good, probably 150 for the 9mm, and then we fired off what five mags of 30, so almost 200 of the 5.56. 5.56 जो बड़ी वाली गन थी उसका 200 rounds और जो छोटी वाली गन थी वो 9mm 9mm 150 rounds. एक राउंड शूट करने में ठीक है, दूसरा राउंड भी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद you cannot shoot. Basically breath, you are out of breath, you do not, like you are tired, your shoulders are giving up. बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत ही. So make sure to shoot gun. It's no joke, but it was fun. Oh yeah, it's so much fun. Great activities, a great stress reliever, good activity and fun for especially groups and everything else. Yeah, thank you, man. Thank you. Because of him, I got a chance to use that big guns and all these things. So thank you, man. Oh yeah, no problem. मैं डाउनटाउन डालास के अंदर हूँ. बहुत ही अच्छा जगह है और आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा, बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए. एंड यू नो व्हाट, आई एम थिंकिंग नाउ if I'm thinking if I should move from Boston to Texas. Wow, this is a big step. But again मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि ये वाला बहुत ही अच्छा जगह है वैसे, तो सोच सकते हैं रहने के लिए. क्या पता कल आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, but I'm thinking for sure. But yeah, Dallas is really good, really beautiful. But so far, everything is really good. What do you think, Josh? Oh yeah, no, everything was awesome, That's good. Now we will gonna go to some kind of like a big gas station that Josh wants me to see, basically. So we are going there. So ये है Buc-ee's, Texas का, like an iconic Texas gas station. Okay, so ये Texas का iconic gas station है. इसका खासियत, इसका सबसे बड़ी चीज़, इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सबसे बड़ा गैस स्टेशन है. गैस स्टेशन में एटलीस्ट 10 से 15 पंप मैक्सिमम आप बड़ा रहता है तो उसमें रहता है, बट इसके अंदर minimum, how many gas pump you think this Buc-ee's have? Oh God, I don't know. It's probably
probably maybe 40. 40 pumps. Yeah, ये गैस स्टेशन वहाँ से शुरू होता है, ये पूरा, और ये बकीस का सिंबल है और यहाँ पे है. इतना ही नहीं है, यहाँ से वापस शुरू होता है and then it goes all the way to that end. और ये सबसे छोटा है बकीस है, टेक्सास का आइकॉनिक गैस स्टेशन. टेक्सास के लोगों को ये, हम लोग स्पेशली 1 घंटा दूर से आए ये सिर्फ देखने के लिए गैस स्टेशन. और क्योंकि ये जो जॉश है वो बोला कि टेक्सास का आइकॉनिक गैस स्टेशन है बकीस. Is this the bigger one? No, this is the small one. This is like a big Walmart store with 40 plus gas stations. Look at this one. Look at this. How big that is. You can get anything in here. सब कुछ मिलता है यहाँ पे. नाश्ता, कॉफ़ी, पानी, बियर, स्लश, ये वो सब कुछ मिलता है. Is something else. Really, indeed, iconic, iconic station of the Texas. Yep, iconic. Yep, that's the word for it. Iconic. ये बहुत ही अच्छा स्टोर है. यहाँ पे सब कुछ मिलता है, इंक्लूडिंग चॉकलेट्स, कैंपिंग स्टफ एंड ऑल दिस थिंग्स. तो ये वाला व्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है. It's really a good experience staying in the Texas. Okay, Josh. Yeah, it was awesome. We had fun. See you next time. Bye, man.